तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं गाइस। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, आजकल जो इतना गर्मी हो रही ना गाइस, तो सारे तालाब तो सूख चुके हैं हमारे वहाँ गाइस। तो हम लोग पशु पक्षियों के लिए गाइस तालाब खोद रहे हैं एक छोटा सा, जो कि उसमें पानी पी सकें गाइस, तो कुछ मदद हो सके गाइस। तो इसके लिए हमें सपोर्ट करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। तो गाइस हम लोगों को खोदते खोदते शाम हो चुकी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं गाइस। करीबन 6:30 बज चुके हैं गाइस। हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर दिया गाइस। ये कम से कम एक डेढ़ फुट का गड्ढा खुद गया है, 1.5 फुट का गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, हमको लोगों को खोदते खोदते शाम हो गई। अभी हम लोग थोड़ा और खोदेंगे, उसके बाद जाएंगे घर को, फिर मिलेंगे कल सुबह गाइस। देखो गाइस, मौसम भी खराब है गाइस, कहीं बारिश होना जाए गाइस। हम लोगों की मेहनत यार देख के कुछ तो सपोर्ट करिए यार। The next day, a few moments later. Two hours later. Three hours later. तो गाइस हम लोग गड्ढा खोद चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो अब इसके बाद हम अपना तिरपाल बिछाएंगे गाइस। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग इसमें पाइप डाल के पानी भरेंगे, मशीन चालू करके गाइस। तो भरने के बाद पानी फिर मिलते हैं आपको। A few moments later. One eternity later. क्योंकि जैसा कि गाइस हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बनाएंगे जानवरों के लिए पीने के लिए व्यवस्था गाइस, तो वही हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हो गाइस, पानी अभी थोड़ा बच्चे लोग इसमें नहाए ना गाइस, इसलिए गंदा हो गया है। और इसको गाइस मैं पानी चेंज कर दूंगा। उसके बाद इसमें जो जानवर वानवर हैं गाइस आएंगे, पक्षी वगैरह पानी पी सकते हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं गाइस, थोड़ा पानी कितना है
लेकिन गाइस अब लौंडो लोग नहा ही रहे इसमें, उसके बाद फिर इसको चैन करने के गाइस पानी, उसके बाद में जानवर पियेंगे गाइस। देख सकते हैं हम लोग कितने मजे हम लोग कर रहे हैं गाइस। गाइस स्विमिंग पूल से ज्यादा इसमें मजा आ रहा है गाइस। तो चैनल पे नए गाइस तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस।